Assalamu alaikum students. Today in the course of research method in psychology, we will learn exploratory research method. Exploratory research method is one kind of method that you can use for psychological research in order to find out or explore new ideas, new things and new phenomena. Exploratory research method. Researcher use exploratory research method when subject is very new. Whenever a researcher desires to explore something new and want to understand the concept that is very new for him or her, he would prefer to do exploratory research method. When researcher knows little or nothing about it and no one has yet explored it, the concept that has not been explored or studied yet, or a researcher didn't find sufficient or substantial evidences pertaining to that specific phenomenon or a situation or a concept, then researcher will explore it यूजिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड। तो ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा कोई आइडिया जो या तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम है, या जिस पर काम ज्यादा नहीं हुआ तो वहाँ रिसर्चर जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड यूज करेगा। The primary purpose is to examine a little understood issue or phenomenon and to develop preliminary ideas about it and move toward refined research questions. So the basic purpose of this research is to examine the little understood issue or a phenomenon that has not been focused by the researcher or scientist, and researcher needs to develop more ideas so that he or she could find the answer of the क्वेश्चन arises in the mind। कि कोई ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको फर्दर उसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, उन क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए रिसर्चर जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड यूज करेगा। द गोल इज टू फॉर्मुलेट मोर प्रिसाइज क्वेश्चंस दैट कैन एड्रेस इन फ्यूचर रिसर्च। सो इट बेसिकली सर्व एज अ फाउंडेशन एंड और फाउंडेशन वो इस तरह की कि जिसकी बेसिस पर फर्दर रिसर्चेस जो है वो डिजाइन की जाएंगी। कि अगर एक कॉन्सेप्ट है और उस पर इतना काम नहीं हुआ है तो ये उस ऐसे रिसर्चेस के जरिए एविडेंसेस के थ्रू आपको हेल्प आउट करेंगे कि यू कैन रिफाइन द क्वेश्चंस एंड यू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर ऑफ अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, एंड दीज फाइंडिंग्स विल फर्दर हेल्प इन जनरेटिंग एंड न्यू आइडियाज और hypothesizing and on these new things to be addressed in future. At the first stage of inquiry, researcher wants to know enough after the exploratory study, or he or she can design and execute a second, more systematic and extensive study. So that is the first level of study. Here, researcher will inquire a new phenomenon or investigate a new phenomenon concept, and after having sufficient findings from exploratory research method, researcher can further design or plan a more systematic study based on exploratory research data. तो ये उसको फर्दर हेल्प करेगी कि उसकी बेस पर उसको स्टडी को एक्सटेंड करने में भी ये हेल्प आउट करती है। सपोज यू हैव डन अ स्टडी, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी, एंड यू कैन एक्सटेंड दैट स्टडी इन फ्यूचर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रियली yields definitive आंसर। तो इसमें जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के जरिए आपको डेफिनेट आंसर जो है वो क्वेश्चन के मिलेंगे। किस तरह के? इट एड्रेसेस द व्हाट क्वेश्चन, इट विल आंसर द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट। जैसे आप कहते हैं ना व्हाट इज दैट, जैसे कोविड-19 था तो कहते हैं व्हाट इज कोविड-19। तो उस टाइम जो बिगिनिंग में जो रिसर्चेस की गई वो एक्सप्लोरेटरी नेचर की थी कि उसको सर्च कर रहे थे कि ये है क्या, इसको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो थ्रू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड you can find the answer of what is the ratio of mental health problems in women in Pakistan. If you want to know that about the prevalence of mental health problems or examine the mental health status of Pakistani women, then you can use exploratory research study। क्योंकि आपको नहीं पता अभी, suppose अगर आपको नहीं पता कि what is the level of
डिप्रेशन, एंजाइटी अमंग वुमेन लिविंग इन पाकिस्तान, तो आप क्या करेंगे? एट द फर्स्ट स्टेप यू विल ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट व्हाट, कि ये क्या है क्या। और अगर व्हाट का आंसर मिल जाता है देन यू मूव फॉरवर्ड टू फाइंड द आंसर ऑफ हाउ, व्हाई। Researcher who conduct exploratory research must be creative, open-minded, and flexible. So, researcher need to be creative so that he could generate more ideas to be explored. He should see view the things with broad vision. He need to be flexible as well. कि अगर एक researcher है वो creative नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ explore करनी है, ये new thing है, and I should work upon that. तो क्रिएटिव आइडियाज आपके पास उसी वक्त होंगे कि जब रिसर्चर में इतनी एबिलिटी मौजूद होगी कि he may generate the idea, he may give the new things to the audience. फिर ओपन माइंडेड कि पर्सन जो है आपका विजन ब्रॉड होना चाहिए, कि आपको ये नहीं होना चाहिए एक रिसर्चर को कि वो बस एक एंगल से चीजों को आप देख रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, तो यू कैन फाइंड वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो वो चीजें जो है वो आपकी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए रिसर्चर को। एंड एज वेल एज रिसर्चर नीड टू बी फ्लेक्सिबल, कि विद रिजिड एटीट्यूड, रिजिडिटी यू कैन नॉट डिस्कवर समथिंग। तो वो चीजें आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली होती हैं, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात उससे थोड़ा सा डिफर कर जाती हैं, तो यू नीड टू बी flexible. Researcher, while doing exploratory study, adopts an investigative stance and explore all sources of information. So, being a researcher, your job is to explore the things, you investigate the things. So, you should be a good investigator, and you have to accept the information you are receiving from different sources. So you need to be apply variety of methods to explore the facts, explore or discover new things, or to investigate the phenomenon. तो वो आपको जितना आप एक्सप्लोरेटरी टाइप की आपके अंदर एक वो होगा ना स्टाइल आपका, और आप इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करेंगे तो यू विल फाइंड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप अपने आप को बिल्कुल वो कर लेंगे तो फिर आप जो है ना ओपन होकर नहीं करेंगे तो फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी। In exploratory study, hypothesis is not framed. The researcher begins investigation with research question, as exploratory study emphasizes on what? In exploratory study, researcher couldn't make the hypothesis because hypothesis formulation based on the previous literature available on the particular topic. कि अगर suppose आप anxiety पर research करने जा रहे हैं तो anxiety पर जितनी researches होंगी available होंगी, in the light of those previous evidences, researcher will frame his own research hypothesis. But here the problem is that the researcher is going to investigate a phenomenon that has not been explored yet, studied yet, or there is a little or nothing or there is no sufficient information or authentic information is available that explain the specific situation, event or phenomenon, or that variable. So researcher is going to explore that. That's why he or she is unable to frame or formulate the research hypothesis. That's why researcher will frame the question, research question, and then he or she will try to find the answer of that. और क्वेश्चन किससे स्टार्ट होंगे? व्हाट से। What is the ratio of that? What is the prevalence of that? What is the level of that? और इस तरह भी हो सकता है, is there any difference? तो इस तरह आप क्वेश्चन बनाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर व्हाट का मतलब है कि आप सिंपल क्वेश्चन इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि आप यहाँ पर रीजंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वाई का हाउ का आंसर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या है क्या क्या चीजें, जैसे एक है कि इज दिस और इज देयर इज अ डिफरेंस, इस तरह की कोई चीजें आप फाइंड आउट कर लें। So through exploratory study, researcher will be able to pay attention on the topic, on the phenomenon that has not been investigated in detail, and researcher is going to find out or is going to discover new ideas and new things. And he's basically here the job of a researcher is to expand the knowledge.
Characteristics of exploratory study. Exploratory research is inexpensive, highly interactive and open-ended in nature. तो exploratory study कोई इतनी expensive नहीं है. With limited financial resources, you can do exploratory research. और highly interactive भी है. इसमें आप जो है वो फुली इन्वॉल्व होकर चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं. और ओपन एंडेड है कि इट विल प्रोवाइड यू वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत रिच इंफॉर्मेशन देगी, डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. सिर्फ ये नहीं कि आपको यस नो कि इंफॉर्मेशन मिल रही है, लिमिटेड मिल रही है. यू कैन एक्सप्लोर सो मैनी थिंग्स. देयर इज यूजुअली नो प्रायर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम पास्ट रिसर्चेस. सो हियर अ रिसर्चर फाइंड लिटिल एविडेंसेस फ्रॉम द already existing scientific literature to make the ground so that he can frame his research hypothesis. और यही एक रीज़न है कि जब वो प्रायर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती तो रिसर्चर जो है वो उसको डिस्कवर करता है. इट हैज़ नो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, जैसे कोलेशन स्टडी और दूसरी स्टडीज़ में है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, ऑब्जर्वेशन स्टडी में, कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होता है कि इस टेक्निक के थ्रू आप इसे लेंगे. लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. The absence of relevant information from past research means the researcher will spend a lot of time studying material in detail, therefore spending so much time conducting exploratory research. So, due to the absence of relevant information, the information a researcher required pertaining to the specific variable of phenomenon he or she is going to study, due to that issue, researcher will have to work hard to study that phenomenon in detail. तो उसको उस पर वर्क करने में उसको बड़ा टाइम लगेगा कि वो उसको ज़्यादा वक्त लगाना पड़ेगा, ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें कि सपोज करें कि अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जिससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन उस तरह नहीं मिल रही है, देन यू विल हैव टू एक्सप्लोर मोर, यू हैव टू सर्च द मटेरियल मोर, यू हैव टू गिव मोर इनपुट to gain relevant information related to a specific topic. तो वो ये होता है ना, तो इस तरह रिसर्चर को भी यहाँ पर ये होता है कि उसको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा. Since there is no standard for carrying out exploratory research, is usually flexible and scattered. तो ये बड़ा एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है. इसका कोई स्पेसिफिक कोई स्टैंडर्ड उस तरह नहीं है. रिसर्च के स्टैंडर्ड्स तो होते हैं, जो क्राइटेरिया वो तो आप करेंगे. जो बेसिक रिसर्च के स्टैंडर्ड्स हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल दोज स्टैंडर्ड्स. जो रिसर्च एथिक्स हैं आपने उनको भी फॉलो करना है, सिस्टमैटिकली आपने काम करना है. लेकिन यहाँ पर आप वैरायटी के फॉर्म में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं. इसमें ये नहीं कि स्पेसिफिक एक वे में ही आप डिजाइन करें. यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, यू आर गोइंग टू डिस्कवर द इंफॉर्मेशन. तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको किस टॉपिक पे कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, उसको कैसे डिजाइन करेंगे. Importance of exploratory study. Exploratory research is carried out when a topic needs to be understood in depth, especially if it has not been done before. So, it is very important and is in exploring and discovering the new things. कि अगर suppose हम क्या करते हैं, literature review करते हैं और एक foundation बनाते हैं, एक rationale बनाते हैं, then we assume the something and make the hypothesis. तो अब होता है यहाँ पे क्या है कि अगर एक टॉपिक न्यू है तो हमने उसको स्टडी करना है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, डेप्थ में अंडरस्टैंड करने के लिए, यह एक ऐसा टॉपिक दैट हैज़ नॉट बीन फोकस्ड ऑफ द साइंटिस्ट, you can investigate that topic in using exploratory study. The goal of such a research is to explore the problem around it and not actually drive conclusion from it. So, आप यहाँ पर रिसर्चर का गोल क्या है? टू एक्सप्लोर समथिंग. ठीक है, एक फिनोमिनन है, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट, यू हैव टू डिस्कवर दैट. एंड और उसमें ये नहीं कि आपने एक अल्टीमेट डिसीजन दे दिया कि आप एक चीज बता रहे हैं. सपोज अगर आप कहते हैं कि दैट इज द प्रिवेलेंस ऑफ डिप्रेशन अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो वो आपने एक रेशो बता दिया, हाई है, मॉडरेट है. After some times of another researcher also examine or find out the prevalence of depression among university students, then the ratio he find out in that paper will be different or may be different from the
रेशो और प्रिवेलेंस यू हैव फाउंड आउट इन योर स्टडी। तो एक कोई अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं है इसमें मिलेगा आपको कि ऐसा ही होता है। यहाँ पे तो एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ये चीजें मौजूद हैं। अब उस पर जो फर्दर स्टडी होगी वो दूसरे रिसर्च मेथड के थ्रू होगी, जहां पर एक अल्टीमेट कंक्लूजन जो है वो रिसर्चर ड्रॉ करता है। Such kind of research will enable a researcher to set a strong foundation for exploring his ideas, choosing the right research design, and finding variables that actually are important for the analysis. So, this kind of work help you in making the foundation for exploring new things, exploring further ideas, and investigating further phenomena. And you can also decide how to choose the best research design, appropriate research design for future researches, and based on these findings you can learn how to analyze the data and how to interpret the data. So this research also helps you in so many ways. Most importantly, such a researcher can help organization or researchers save up a lot of time and resources, and it will enable the researcher to know if it worth pursuing. So, on the basis of exploratory research design, researcher may save his or her time and by saying that this phenomenon has been discovered by the researcher, and the finding of that exploratory studies are saying that so that we shouldn't continue that topic if that topic or that phenomenon is not worth enough to be investigated further. तो वहां पर किस चीज को परसू करना है, किसको नहीं करना है, ये भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू रिसर्चर जो है वो फ्यूचर डिसीजन लेता है कि एक चीज परसू करे नहीं करे, इसको कंटिन्यू करे नहीं करे, उसे पता चल जाता है। जैसे सपोज यू हैव फाउंड आउट द आंसर ऑफ व्हाट, तो अब व्हाट का आंसर आपको मिल गया, इसके बाद आप उस फाइंडिंग को लेकर सोच सकते हैं कि क्या do I need to find the answer of how and why or not। तो उससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको व्हाट का आंसर मिलता है और वो बड़ा वैल्यूएबल एक चीज है, आपको लगता है कि हाँ इसका है, तो फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस रिसर्च को फिर एक्सटेंड नहीं करते हैं, या आप कहते हैं कि छोड़े इस पर काम करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। Types and methodology of exploratory research. There are two ways in which research can be conducted, namely primary and secondary. So you can conduct two kinds of exploratory research, primary and secondary. Under these two types, there are multiple methods which can be used by a researcher. So, using primary and secondary type of exploratory study, you can employ different research method for in the light of your research project, research objectives. The data gathered from these research can be qualitative or quantitative. So, you can find, you can have the data in both qualitative and quantitative form. Some of the most widely used research design include the following: primary research method, secondary research method. So these both kind of methods can be used by a researcher to explore or discover a phenomenon. Primary research method. In a primary research, information is gathered directly from the subject. When a researcher directly collects the data from the research participant, it will be referred to as primary research method. Primary research is specifically carried out to explore a certain problem which requires an in-depth study, a problem that should be investigated in detail, and whenever you require in-depth information related to a issue or problem or a phenomenon, then you should carry out primary research method. Primary research method includes survey, polls, interview, focus groups, observations. So these methods are available which can be employed to do primary research method. जब कभी आपको जरूरत पड़े एज ए रिसर्चर, यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड में प्राइमरी रिसर्च करते हुए आप ये वाले सारे मेथड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। सर्वे भी कर सकते हैं, इंटरव्यू भी कर सकते हैं, फोकस ग्रुप जो एक डिस्कशन होती है दैट इज हेल्ड among more than 2 participants, तो वहां पर आप 4, 5 या 6 participants, तो उनमें
एक साथ उनका जो है वो उनमें डिस्कशन होती है, तो उस थ्रू भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है. यू कैन ऑल्सो मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्पेसिफिक बिहेवियर ड्यूरिंग एक्सप्लोरेटरी स्टडी. Secondary research method. In secondary research, information is gathered from previously published primary research. So here researcher will collect the data from other sources rather than the research participant directly to make the conclusion. In such type of research, you gather information from sources like case studies, magazine, newspaper, books, and etc. So here researcher will explore or gather the information from variety of sources. He will review the books, case studies, magazine, newspaper, and etc. So here this information is not taken directly from the research participant, but from the other sources as mentioned here. Students, with the use of primary research method and secondary research method, you can explore new things, you can discover new things or a phenomenon that has not been focused of the attention. अब इस यहाँ पर आप हर तरह के वो कर सकते हैं कि डिफरेंट प्राइमरी रिसर्च मेथड में भी आपके पास बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और सेकेंडरी में भी आपके पास हैं. आप ऑनलाइन रिसर्च को भी वो देख सकते हैं, लिटरेचर भी सर्च कर सकते हैं, केस स्टडीज को सर्च कर सकते हैं. इसके अलावा आप सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू भी कर सकते हैं, फोकस ग्रुप भी आप ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच है ये. तो इसमें जो भी आपको अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो मेथड आपको सूट करता है और जिस सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन यूज इट. Now the advantages of exploratory research method. The researcher has a lot of flexibility and can adapt to changes as the research progresses. अभी आप देख लें, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर वैरायटी के मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जो है किसी आइडिया को, किसी कॉन्सेप्ट को स्टडी कर सकते हैं, और बड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच यहाँ पर है. और रिसर्चर कैन अडेप्ट विद द सिचुएशन ड्यूरिंग द स्टडी, तो वो उसको कर सकता है, जो भी चेंजेस हैं को वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है. इट इज यूजुअली लो कॉस्ट, और इसका कोई इतनी एक्सपेंसिव रिसर्च नहीं है. आप थोड़े से उसमें आप काम कर सकते हैं, आप अपने रेंज के मुताबिक काम कर सकते हैं. इट हेल्प्स ले द फाउंडेशन ऑफ अ रिसर्च विच कैन लीड टू फ्यूचर रिसर्चेस, और इट हेल्प यू इन मेकिंग द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर रिसर्चेस. कि आपके पास एक फाउंडेशन होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाउंडेशन यू कैन जनरेट एंड more hypotheses and frame more questions to be investigated. It enables the researcher to understand at any early stage if the topic is worth investing the time and so resources, and if it is worth pursuing. So researcher will decide on the basis of exploratory research finding that this topic must be extended or it should be studied in future or not. तो ये बड़े डिसीजन इम्पोर्टेंट रिसर्चर जो है वो ले सकता है, ताकि उसका टाइम भी बच जाए और रिसोर्सेज भी बच जाए. It can assist other researchers to find out possible causes for the problem, which can be further studied in detail to find out which of them is most likely cause for the problem. Suppose you have find the answer of what while addressing the problem of depression. Now you have found out the answer of what, so what will future researcher do? They will now find the answer of how and why. क्योंकि ऐसा ही होता है कि पहले आपको पता है वो ना कि ये है क्या, जब आपको ये पता होता है कि ये चीज है, what is that, this is that, so then you will move forward to explore how this thing has been developed, क्यों ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, क्या कॉजेस हैं, और फिर आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आएंगे. तो ये दूसरे रिसर्चर्स को बहुत हेल्प आउट करती है कि आप जो उस नॉलेज को आप एक्सपेंड करें और उस पर फर्दर जो है वो काम करें. Now there are some disadvantages associated with exploratory research method. Even though it can point out in the right direction towards what is the answer, it is usually inconclusive. So although it provides you the answer of what, despite that you cannot make ultimate conclusion based on the exploratory research data. तो आपको आंसर तो मिल गया है, लेकिन चीजें चेंज हो जाती है ना.
तो अभी एक चीज है, फिर दूसरी है, तीसरी है, तो यहाँ पे अल्टीमेट डिसीजन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज दैट दे प्रोवाइड क्वालिटेटिव डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन कैन बी जजमेंटल एंड बाइस्ड, एंड समटाइम्स if you have the data in qualitative form, in such condition it will be very difficult for you to interpret the obtained information. तो वहाँ पे जब आप क्वालिटेटिव डाटा को वो कर रहे होते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है, उसकी बाइसनेस या थोड़ा जजमेंटल रिसर्चर जो है होने के उसके चांसेस हैं. Most of the times exploratory research involves a smaller sample, hence the result cannot be accurately interpreted for a generalized population. So if a researcher has carried out a study on a small sample, then it will be difficult for him to generalize the findings on the whole target population. कि कुछ 100 पे की है, 200 पे की, 300 पे की है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. जब आपका लार्ज सैंपल होता है तो आपके लिए ज्यादा वो होता है कि आप उसको कर सकते हैं. Many times if the data is being collected through secondary sources, then there is a chance of that data being old and is not updated. And if you are fully relying on the secondary sources to gain the information, so there are chances to have the information that has not been updated with the passage of time, कि वो एक कहते हैं कि उसमें गैप आ सकता है या ओल्ड इंफॉर्मेशन है, बुक से, मैगजीन से मिल रही है, तो जो लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो फिर नहीं मिल पाती है कि अगर आप उस रिसोर्सेज पे कर रहे हैं. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडी के. Now students, you are required to frame the title and research questions for exploratory research method. Suppose you are interested in doing exploratory research, so how will you frame the research question and what kind of research questions you would like to address using exploratory research method? Students, you are being given 15 minutes to complete that task.